Hello friends, welcome to my channel Learnify Crafts. My name is Abhishek Singh and today I'll be covering a topic which is Introduction to the Python and what is Python. So let's get started with the very first topic, that what is Python. So here I have written a definition. Let's not get into that. In simple words, Python is a programming language. And what is a programming language? Let's take an example. We have two boys. One is Rahul and another is Udhay. Rahul is North Indian and Udhay is South Indian. Sorry. Okay. Rahul need to give some instruction to the Udhay. So Udhay does not know Hindi. So what will Rahul do? Rahul will take a help of a third person who is Suresh, and he will ask Suresh to make Udhay understand that what he need to do, what Udhay need to do. So he will give instruction to the Suresh, and Suresh will make Udhay understand that what he need to do. Okay. So basically यहाँ पे हमारे पास जो सुरेश है वो दल्ला है, और वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करता है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दल्ला फॉर अस, और हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो इंस्ट्रक्शन को मशीन को समझाता है. तो यहाँ पे हमारे पास वी कैन से लाइक वी आर राहुल. इन दिस केस सुरेश इज पाइथन और एनी लैंग्वेजेस, एंड दिस उदय इज मशीन. तो यहाँ पे तो आई होप कि आपको समझ आ रहा हो क्या होता है कि मशीन यूज बाइनरी नंबर्स लाइक 0 1 0 1 0 1 0 1. मशीन का लैंग्वेज चाहिए, और हमारे लैंग्वेज है वी अंडरस्टैंड हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी. और ये जो सुरेश है, सुरेश की भी कुछ लैंग्वेज है. सुरेश वैसे नहीं उसको भाई बिहारी बोल दो या फिर बंगाली में बोल दो, सुरेश समझ जाएगा. नहीं, सुरेश को भी थोड़ा सा प्रॉपर ग्रामर के तरीके से बताना होता है. तो हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ग्रामर्स होते हैं. जैसे कि हम इंग्लिश यूज करते हैं, हिंदी यूज करते हैं, तो हिंदी के लिए व्याकरण है, इंग्लिश में ग्रामर हम यूज करते हैं. तो हम यूज करते हैं, वैसे नहीं कुछ भी बोल देते हैं, तभी समझ आएगा अगर हम उसको प्रॉपरली बोले. तो वो प्रॉपर वही एक इंस्ट्रक्शन होता है, वही कोर्स होता है जो हम प्रॉपर मैनर में लिखते हैं. जब अगर हम प्रॉपर मैनर में लिखेंगे तो ही सुरेश को समझ आएगा, तभी सुरेश उदय को समझा पाएगा. अगर राहुल ने प्रॉपर तरीके से अगर सुरेश को नहीं बताएगा तो सुरेश उदय को नहीं समझा पाएगा. इसे थोड़ा मैंने डीपली इसलिए बताया तो ताकि थोड़ा सा आपको ना आइडिया लग जाए दैट व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो दैट आगे की चीजें इजी हो जाएगी आपके लिए. ओके, इतना समझ में आ गया होगा. तो ये इंटरप्रेटर हमारे लिए कुछ नहीं डल रहा है. और नाउ लेट्स लुक इनटू कि हम क्यों दूसरे लैंग्वेजेस यूज करते हैं. तो हम एक ही सुरेश को रख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग बंदे. अब सुरेश क्या हो, तो सुरेश का काम क्या है, इसको समझाना है. ठीक है, सुरेश कैसे भी इसको समझा देगा, हम इसे बता देंगे, इंस्ट्रक्शन दे देंगे, सुरेश समझा देगा. तो दैट इज अ इंटरप्रेटर. एंड नाउ व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So it is highly developed language. We can use in many fields like for website development, for game development, in the data science. So Python have very uses, and it is a very highly developed language. And Python is dynamically typed and a garbage collected language, and it supports multiple programming paradigms including data structure, object oriented, and functional programmings. Okay. Now let's see what are the uses of the Python. So we can use Python in many fields like for the website development, for the game development, for the scientific and numerical application, then for the AI ML, in machine learning also we use data science. Data science is in nowadays data science is very popular in all the fields. Okay, it is very popular language. Now we can use data science for the software development, for the data scientist, for the data analysis and visualization, which I'll be covering in upcoming playlist, because I'll be making videos on the data science only. So I would suggest if anybody who want to make a career in data science, or anybody who is pursuing data science, they can subscribe this channel. This channel is going to help them a lot. Okay, so there are many uses for the Python, as Python is very popular language. Some key features of the Python, which is Python is very easy to learn and readable language. Means if you compare Python with other programming language like C, you will find that Python is really easy to understand and write. And interpreted language, like Python is an interpreted language, unlike the C, which is a compiled language. So interpreted language interpret lines one by one, and in the compiler language, it compiled all the lines together. So that is the difference between interpreted language and compiled language. So हम compiled language को क्यों prefer नहीं करते interpreted language से? इसलिए क्योंकि compiled language में क्या होता है, वो एक बार में सारे कोड्स को रन करता है, और कहीं भी एरर हुआ
तो वो क्या करेगा, सारे कोड्स के अंदर एरर थ्रो कर देगा, पूरी पूरी प्रोग्राम में एरर थ्रो कर देगा। बट इंटरप्रेटर लैंग्वेज में क्या होता है, 1 by 1 कोड्स को पढ़ता है, रीड करता है, तो वहां पे जहां पे भी कोई गलती आती है या फिर जहां पे भी कोई मिस्टेक है तो वो बस उस लाइन पे थ्रो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी लाइन को दोबारा से चेक करने पे, आप सिंपली उस लाइन को चेक कर सकते हैं कि वहां पे क्या गलती हुई है। तो ये होता है इंटरप्रेटर लैंग्वेज का फायदा, ठीक है। नाउ डायनेमिकली टाइप मींस सॉरी, in other language we have to define variables, data type, we have to define data type for the variables, and in the Python we don't have to do so. Python itself detects the data type of the variables. We'll see what is data type and what is variable in upcoming videos. Okay, now it is open source and free of cost, so Python is available for everyone. It is free of cost. You can download Python from python.org, and it is free of cost, available for everyone at some extent. Okay. Then a large standard library. Python has a large standard of libraries available. Then high level language. As I told you, Python is very developed language and very popular language. You can use Python in every field, like for the graphical designing, for the games, for everything you can use Python. And you can do object oriented programming in the Python also. Then it has a large community support. If you find any difficulty while using Python, you can easily search on Google or on YouTube. There are thousands of people available to support you. Then platform independent. This means if you develop your Python code on Windows, you can run that Python code on Linux. You can run that code on iOS as well, on Android as well. So you will not find difficulty on changing the platform while using Python. Okay. Now graphical user interface support. Python has really good GUI support. If you want to develop game or a website and you want to do a graphical designing, so Python gives a very good support for that. Simply if you want to develop a game, तो graphical design तो करना पड़ेगा मेरी जान, इसलिए बस. Okay. Now moving forward, अब हमारे पास है कुछ terms like what is Python interpreter, what is prompt command and IDE. Interpreter is simply, ये जो मैंने बताया था आपको, ये सुरेश दल्ला, वही हमारे पास इंटरप्रेटर है. तो पाइथन के अंदर जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, मशीन जो लैंग्वेज होता है उसे, सॉरी, जो हमारा लैंग्वेज होता है उसे मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज करता है. इट इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू मशीन कोड्स. ओके. देन पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट. ये पाइथन के थ्रू हमें एक फीचर मिलता है जहाँ पे हम पाइथन के कुछ कोड्स को लिख करके उसे रन करवा सकते हैं. जैसे कि अब क्या करते हैं, आईडीज के अंदर हम सारे के सारे कोड्स को रन करते हैं, सारे के सारे पूरी की पूरी हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं. बट कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ कोड्स को रन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहीं वो एरर तो नहीं दे रहा है. अगर वो लाइन सही होता है तो वो चल जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है. अगर नहीं होता तो वहाँ पे एरर चेक हो जाता है. तो उससे क्या होता है, अगर हम कुछ ज्यादा बड़े प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं प्रॉम्प्ट कमांड के अंदर सिंपली. ओके. एंड व्हाट इज आईडी? आईडी लाइक यू कैन से एनवायरनमेंट वेयर वी कैन write our code, where we can develop our code. So for example, as we have spreadsheet, we have many spreadsheets available in the market like Google Sheet, Excel, Word Wrap, etc. We have many sheets available, and each sheet have some different features, but in which they do the same task. We used to collect data in that. In the same manner, IDs work. We have many IDs available in the market like IDLE, which is the official ID for the Python, which is provided by the Python, from the Python. When we download Python, it is a default ID which we get. Then we have some other ID like PyCharm, Spider, Visual Studio. So we will going to use Visual Studio in our coming video because it has some extra features जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. तो सिंपली IDs वही होती है जहाँ पे हम कोड को लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं वहाँ पे. और IDs में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट हमें मिल जाता है IDs के थ्रू. लाइक जैसे कि हमें वी कैन गेट अ सजेशन कि कहाँ पे गलती हो रही है, तो सजेशन में मिल जाती है IDs के थ्रू. तो ये हेल्प कर देता है IDs. ओके. नेक्स्ट अप. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I'll be making the next video on the topic how to download Python in your system. And thank you so much. And please, if you like the video, please do like the channel and subscribe the channel. It is going to help you a lot for your data science career, or if you want to become a website developer also, or something like that. Means if you want to do coding, so this channel is really going to help you a lot. Thank you so much and have a good day. पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो